एंड ड्यूरिंग दोज टाइम्स ओनली, उसी वक्त के दौरान मेरे मित्र सब अंग्रेजी समझ पाते हैं या फिर हिंदी ठीक रहेगा? हिंदी ठीक रहेगा, ठीक है। हम कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना हिंदी में बात करें। तो 2014-15 की मैं बात कर रहा हूँ कि तब जो है हमारे देश की लीडरशिप चेंज हुई और वहाँ पे राष्ट्रीयता की काफ़ी जन जागृति कुछ अलग तरह से खड़ी हुई। और उसी दौरान एक रिपोर्ट आया था, आर्क डेली करके, जो है दुनिया का सबसे बड़ा ई मैगजीन कहा जा सकता है आर्किटेक्चर का, वास्तु का। तो उसमें एक रिपोर्ट आया था और जिसमें 20 वर्दिएस्ट फर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, जो सबसे अच्छी फर्म्स है अपने पूरे विश्व की, उनका एक रिपोर्ट छपा था। तो उसमें पाया कि सिर्फ 5, हमारे देश की तो कोई थी ही नहीं, पर जापान से 5 फर्म्स थी। अब मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे मित्र यहाँ पे सब बैठे हैं, अगर उनको पूछूं मैं कि आपके बाप दादा जो है पुराने आपके जो वंशज थे तो वो क्या कपड़े पहनते थे, तो शायद आ जाएगा कि धोती पहनते थे या अंगरखा पहनते थे या कुर्ता पहनते थे, पगड़ी डालते थे। और आज आप अगर देखें तो अपने आप को पाएंगे कि आपने पहने हुए हैं शर्ट और पैंट, जो को बिलोंग नहीं करते हैं वैसे अगर देखने जाए तो। बट किसी कारण हमने या फिर बहुत सहज तरीके से पता भी नहीं चला और उनको अपना बना लिया है। तो ऐसे वक्त में जब जापान को भी ये असर पड़ी, तभी भी देखने अगर जाए तो 5 जापानीज फर्म्स जो है वो इस लिस्ट में थी आर्क डेली के, जिसमें कि 20th वर्दिएस्ट फर्म थी। तो अगर हम देखें तो जापान को भी इतनी असर हुई है, तो क्यों जापान का नाम फिर भी इस लिस्ट में था? तो एक चीज़ ज़रूर पाई मैंने कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने कल्चरल रूट्स, अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है, उन्होंने उसको नहीं छोड़ा है। उन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ अपने देश की संस्कृति को आगे लेते हुए और साथ साथ जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने ऑफर किया है, जैसे कि टेक्नोलॉजी हुई, जैसे कहे कि मॉडर्नाइजेशन हुआ, सभी चीज़ों को करने की जो आसानी, सहूलियत जिसे कह सकते हैं, या फिर उसको समझने के जो है बहुत आसान तरीके जो उन्होंने ढूंढे हैं, उन दोनों का समन्वय करते हुए अपना आर्किटेक्चरल या फिर वास्तु का काम उन्होंने जारी रखा। और उसी वजह से कहीं ना कहीं वो लोग वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में आते हुए भी आज जहाँ पे हैं वो वहाँ पे हैं। तो ये एस्पेक्ट हम अगर साउथ एशिया में अगर देखने की कोशिश करें तो साउथ एशिया बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है वेस्टर्न माइंडसेट से, और उसमें से अभी तक बाहर आने में काफ़ी कम लोग जो है जूझ रहा है, पूरा देश जूझ रहा है, पूरा ये साउथ एशियन रीजन जूझ रहा है, पर अभी भी जो है काफ़ी काम करना बाकी है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो ये 20 के लिस्ट में तो था ही नहीं और 500 के लिस्ट में भी नहीं था कोई भी इंडियन फर्म। तो ये जरा ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं किसी एक को तो कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा कुछ हो। और मैं ऐसा समझता हूँ कि काफ़ी लोग करते होंगे, पर मैं भी उसमें मेरा भी एक नाम जुड़ जाए तो मुझे ईश्वर की बड़ी कृपा रहेगी, ऐसा सोच के हमने भी ऐसा कुछ करने की कोशिश की। और उसको सबसे आसान जो तरीका था उसको करने का वो ये था कि हमारा पहनावा, अगर किसी स्त्री को हम देखें जो भारत देश की है, वो उन्होंने अगर साड़ी पहनी हुई है, और अगर किसी पुरुष को ले ले, उसने अगर धोती पहनी है, और हमारे देश के अलावा दूसरे जो 210 देश हैं पूरे विश्व में, कहीं पे भी जाके अगर खड़े रह जाएं तो एक जो है सामने जो भी व्यक्ति होगा वो अगर इस पहनावे को पहचानता होगा तो वो बोल देगा कि भाई ये तो भारत से है। अगर नहीं पहचानता होगा तो वो आके पूछेगा भाई कहाँ से हो, तो भी जो है बात बन गई अपनी, और हम कहेंगे हम भारत से है। तो ये जो है हमारे पहनावे में बहुत ज़बरदस्त ताकत है, ऐसा मैं समझता हूँ।
तो जैसे ही ये पता चला कि भाई हमारा पहनावे में इतनी ज़्यादा ताकत है, तो 2015 में सबसे पहला जो है वो बदलाव मैंने अपने आप में ये लाया कि ये पहनावा पहनना शुरू करूं। धन्यवाद। अब ये तो हुआ, जैसे ही आप अपना पहनावा बदलते हो तो आपका सोचना बदलता है, ऐसा मैं समझता हूँ। आपका खान पीन, आप अपने देश की ओर जो है वापस जागृति आपकी आ जाती है, आपका अवेयरनेस जो है उसकी तरफ बढ़ जाता है। तो हमारे देश की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो हमारी कलाएं हैं वो इतनी ज़्यादा समृद्ध है। हमारी जो स्पिरिचुअलिटी, जैसे कहेंगे कि धार्मिकता तो नहीं, पर हम ये कह सकते हैं कि जो पूरे देश का जो सोच है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो इस देश को दिया है, और उसी को लेके सभी ने, बहुत सारे ऋषि, बहुत सारे महापुरुषों ने उस एक सोच को लेके अपने अपने जो फील्ड्स, अपने अपने कार्य क्षेत्र में उन्होंने उसको ट्रांसपायर किया। वो चाहे फिर आयुर्वेद हो या फिर योगा हो, यानी या फिर जो है अपना प्रोफेशन, जैसे कि वो मंदिर में पुजारी हो, या फिर वास्तुकला हो, या फिर कोई भी पार्ट में उन्होंने जो है ईश्वर प्राप्ति का एक जो साधन, जरिया जो है वो ढूंढा अपने प्रोफेशन के द्वारा। तो यही कुछ करने की कोशिश जो है हमने इस पहनावे को बदलने से हमें भी ये रास्ते दिखे कि अब जो है हमें क्या करना चाहिए वास्तुकला के साथ, जो कि भारत देश को रिफ्लेक्ट करे। और इसलिए जो है हमने अपने आर्ट फॉर्म्स की ओर देखना शुरू किया, और उसमें हमने जो हमारे घर में बहुत इजीली प्रेवलेंट था वो था इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, भारतीय शास्त्रीय संगीत। हमारी जो साली साहिबा हैं तो वो खुद पद्म विभूषण डॉक्टर प्रभा अत्रे, जो कि किराना घराना से और पूना से हैं, तो उनकी वो शिष्या हैं। और वो हम सब साथ में रहते थे। और ये स्टोरी हालांकि आने वाली है बीच में, पर फिर भी मैं ये बात कर लेता हूँ। तो हमारे पिताजी एक दिन आए और आके उन्होंने बताया कि भाई कलापी, मैत्री, जानकी, हम जो है थोड़े वक्त में ही हमारा एक लैंड खरीदने वाले, हम एक जगह खरीदने वाले, और जहाँ पे हम गुरुकुल की स्थापना करेंगे। जैसे ही उन्होंने ये बात की कि हम गुरुकुल की स्थापना करेंगे, तो बस दिमागी घोड़े दौड़ने शुरू हो गए कि भाई अब इसका आर्किटेक्चर क्या होगा, यानी हम इसका स्वरूप जो है वो किस तरह से, इसका स्वरूप क्या देंगे। और उस वजह से एक हमारे बीच में एक संवाद शुरू हुआ, और उस संवाद के स्वरूप जो है हमने देखा एक और आर्किटेक्चर की जो हमारी डिक्शनरी हम कह सकते हैं, डीकेचिंग, फॉर्म, स्पेस एंड ऑर्डर, मैं वो लेके बैठ गया। और उसमें भाई लाइन क्या है, पॉइंट क्या है, प्लेन क्या है, वॉल्यूम क्या है, तो ये सारी परिभाषाएं एक तरफ जो है वो मैंने बोलना शुरू किया। और जानकी, जिसको कोई बुक्स की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में यानी म्यूज़िक की डिक्शनरी हम कह सकते हैं, या फिर उसकी समझ जो है उतनी विकसित है। तो वो दोनों हमारा जो है ये डायलॉग शुरू हुआ, और हमने सही मायनों में अगर पॉइंट अगर आर्किटेक्चर में है तो वो म्यूज़िक में क्या है वो हम ढूंढ पाए, अगर वो लाइन यानी लेंथ एंड ब्रेथ है तो वो म्यूज़िक में क्या है वो हम ढूंढ पाए। तो ये हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद हम ऐसा कुछ तारण निकाल पाए कि भाई जो है कहीं ना कहीं ये दोनों में साम्यता है। म्यूज़िक जो है हम जानते हैं कि हम उसका श्रवण कर सकते हैं सुनने से, और उसका कोई स्वरूप देना हो तो वो नामुमकिन है, उसको स्वरूप नहीं दिया जा सकता। उसी तरह से हमारा जो फील्ड आर्किटेक्चर का है या वास्तु का है, तो वो जो है हमें उसको स्वरूप देना होता है, हमें उसको ड्रॉ करना होता है, हमें उसको रेखाएं बनानी होती है, और फिर जो है उसी से जो है पूरा जो है बिल्डिंग खड़ा होता है, और उसके अंदर हम जो है निहित होते हैं। तो इन दोनों को समन्वय करके किस तरह से काम करना, वो हमने पूरे से कोशिश करी है हमारे काम में लाने की, जो कि हम पक्के से आज ज़रूर से देखेंगे। जब तक और चीज़ें और वहाँ पे सुलझाया जा रहा है, तो मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने जिस समन्वय की बात की, तो आप जो ये पहनावा मेरा देख रहे हैं, तो
ये जो है राग मियाँ मल्हार, मियाँ मल्हार माने कि मल्हार जो राग है वो बारिश प्रधान राग है, यानी उसी दौरान ये ज़्यादातर गाया जाता है। मल को हरने वाला, जो कि मल को हरने वाला, मल माने कि जो हमारी सब जो गंदी कहें या फिर क्लिष्ट चीज़ें हैं उनको जैसे सफाई करने की बात जहाँ पे आती है तो वो हुआ मल को हरने वाला मल्हार, तो उसका नाम मल्हार है। और तानसेन जी ने इसको काफ़ी प्रचलित किया था और तब गाया था, तो इसीलिए राग मियाँ मल्हार उसको नाम दिया गया है। मल्हार के काफ़ी सारे प्रकार होते हैं और 9 प्रकार से तो हमने खुद ने ही काम किया हुआ है। और मियाँ मल्हार का जो डिपिक्शन है ग्राफिकली वो अच्छा, ये एक और मैं बात बताना चाहूँगा कि जितने भी ग्राफिक्स बनाए जाते हैं राग मंडला जब हम डेवलप करते हैं तो ये डॉक्टर जानकी करते हैं, यानी हम नहीं बनाते हैं इसको। बढ़िया बात यह है कि उनको NID, सेप्ट आर्किटेक्चर, सेप्ट इंटीरियर डिज़ाइन सब में एडमिशन्स मिल रहा था, बट उन्होंने तय किया कि भाई जो है, यानी ड्राइंग में खूब अच्छे थे और ट्रांसलेशन में, तो उन्होंने तय किया भाई मैं जो है म्यूज़िक पढ़ूंगी, और उन्होंने आगे अपनी म्यूज़िक में तो उनका बेसिकली जो दोनों सोच जो है और उनकी ड्रॉ करने की क्षमता ऐसी है कि वो ये सब काम कर सकती है, यानी जो अपनी सोच है या फिर उनकी म्यूज़िक की समझ को अगर ड्रॉ करना हो तो वो कर पाते हैं। तो उसी से जो है ये राग मियाँ मल्हार मंडला जो है डेवलप किया गया, और इसको मैंने पेंडेंट के स्वरूप में भी जो है और कपड़ों के स्वरूप में भी जो है धारण किया हुआ है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो पानी के साथ या जल के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो इस वजह से जो है इसको लेके और हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और हमारे देश की सबसे बढ़िया बात है कि ज्योतिष शास्त्र इतना ज़बरदस्त शास्त्र है जो आज AI काम कर रहा है। मैं उन दोनों में साम्यताएं मानता हूँ कि है। AI हम उनके पास पूरा एक डेटाबेस है, और उस डेटाबेस के कारण हम जब उसको प्रश्न पूछते हैं तो उसके वो इन्फ्रेंसेस कहता है। ज्योतिष शास्त्र क्या है? आपको आपके भविष्य की बात जब करता है तो इसका मतलब कि ज्योतिष शास्त्र हमारे ऋषि मुनियों ने उसमें एक डेटाबेस कलेक्ट करके और तैयार किया हुआ है, और उनको जो स्टडी करके और उसको ज्योतिषी जो है वो इसकी स्टडी करता है। ही इज़ द वन हु इज़ दिस engineer who has studied this hardware and software, and then actually the software, and then when a person जाते हैं उनके पास और कहते हैं कि भाई अब आप पढ़िए, तो वो जो है उसका आंकलन करते हुए और उनकी जो समझ और जितनी स्टडी है उसके द्वारा वो बता पाते हैं कि आप ये हैं, आपके साथ ये घटित होने वाला साइंटिफिक है कि ऑब्जर्वेशन जो पूरे कॉस्मोस का, जो एक सिंपल सी अगर बात करें कि चंद्र को अगर देखें तो जैसे ये तो गोवा तो बीच माने यहाँ पे तो समुद्र जो है चूमता है इस धरती माँ को, तो जैसे अमास आती है या फुल मून माने पूनम होती है तो हम पानी में आना और जाना दिन में मेरे हिसाब से 2 बार तो हम ये पूरी प्रोसेस या फिनोमिनन देखते हैं कि वो जाता है और आता है। जब हम ये असर पानी पे डायरेक्टली इतना देख पाते हैं तो हम खुद 70% पानी से बने हुए हैं, तो जो उतार चढ़ाव समुद्र के पानी को अगर हो रहा है तो वही उतार चढ़ाव हमारे अंदर जो निहित पानी है उसको भी होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम एक छोटे से छोटा प्लैनेट, one of the smallest planet, I would not say the smallest, but is moon, which has the diameter of 2060 square kilometer, and the sun, which is so large, and it has the diameter of 7 lakh around square kilometer, or rather kilometers. That is the diameter of the sun. So अगर जो इतना छोटा अगर प्लैनेट है वो भी अगर असर कर सकता है तो ये तो सन और दूसरे जो हमारे गुरु शुक्र सोम मंगल बुध, गुरु शुक्र शनि रवि,
राहु और केतु, ये हमारे दिन भी हो गए और हमारे प्लैनेट्स के नाम भी हो गए। यानी हमारी संस्कृति इतना सरल थी कि उसको याद रखने के लिए हमें कुछ और नहीं करना था। आपको जो है, अगर आपके दिनचर्या का वो पार्ट बन जाता था तो आपकी वोकेबलरी जो है वो बहुत ही आसानी से आप उसको जोड़ सकते थे कि भाई आज मंगलवार है, आज मंगल माने लाल रंग का बात हो रही है, तो हम आज कौन से कपड़े पहने, तो लाल कलर के पहनेंगे तो मंगल देव जो है खुश होंगे। बुध है ग्रीन पहनेंगे, बृहस्पति है येलो पहनेंगे, शुक्र है पिंक पहनेंगे, शनि है तो काला या ब्लू पहनेंगे। तो ये जो बहुत ही, और उसके साथ नंबर्स भी जुड़े हुए हैं, ये भी एक बहुत जबरदस्त बात है। 1 सूर्य, 2 चंद्र, 3 बृहस्पति, 4 राहु, 5 बुध, 6 शुक्र, 7 केतु, 8 शनि और 9 हुआ मंगल। तो ये हमारे पास एक क्लाइंट आए और जिनका वो घर में 2 ही लोग रहते थे, एक मदर थी और उनका बेटा, और दोनों की बात ये हुई कि दोनों की जन्म तारीख 20 तारीख थी। तो 20 को अगर टोटल देखें तो 2 पे आ सकता है, हम 2 पे ला सकते हैं उसको। 2 माने हुआ चंद्र, चंद्र माने पानी, तो पानी हुआ। और इसी वजह से हमने ये राग मियाँ मल्हार को लेते हुए उस घर के एलिवेशन, हमें सिर्फ फसाड करना था तो उसको लेके हमने जो है पूरा, तो अभी अगर डायमेंशंस भी अगर देते हैं तो 200 बाय 200 माने 8 इंच बाय 8 इंच। अगर दूसरा डायमेंशन देना है तो फिर 2 इंच बाय 2 इंच भी चलेगा, बट एनीथिंग विथ रिलेटेड टू द नंबर 2। एंड देन 2 represents the color white, so now everything in white, right? So there is a beautiful relationship that you can actually, हमारी संस्कृति हमें बहुत सारा ऐसा दे सकती है कि जो कि बहुत ही, यानी जिसे एक्सप्लोर करना बाकी है, और जो हम दुनिया के सामने अगर रखेंगे तो उनको बड़ा आश्चर्य होगा कि ये इस तरह से जो है होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ पे यानी हमारे तक आया हुआ है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारी सांस्कृतिक विरासत हमको बहुत सारा ऑफर कर सकती है, और हम काफ़ी सारा जो है दुनिया को प्रदान कर सकते हैं डिज़ाइन क्षेत्र के द्वारा। आई थिंक यहाँ मुझे मेरी बात कंप्लीट करना चाहिए। अब बस 2-1 मिनट की बात हो रही है, तो 2 मिनट के बाद हम वापस जो है प्रेजेंटेशन ही देखें, ऐसा करते हैं, ठीक है? या इतनी हिंदी मैंने अपनी जिंदगानी में पहली बार बोली है। आप सबकी प्रेरणा से पता नहीं आज मौका मिला है कि हम बातचीत कर सके या फिर वो टटोल सके वापस से ये शब्द, क्योंकि होता है कि हमें हिंदी या इंग्लिश बोलना होता है, या गुजराती हैं तो गुजराती बोलते हैं, पर हिंदी बोलना तो बड़ा अलग सा काम हो गया आज तो। गोवा की जब बात आ रही है, आज गोवा में हैं हम लोग, तो मुझे एक हमारे बहुत ही अच्छे मित्र याद आ रहे हैं। इनका नाम है आर्किटेक्ट अभिजीत सादले करके, और जो कि टेम्पल आर्किटेक्चर में उन्होंने और उनके पिताजी ने काफ़ी वर्क किया हुआ है। कमलाकर सादले जी जो कि पोंडा से है, और ये जो हमारी हेरिटेज साइट्स हैं और जो हमारा पुरातन टेम्पल आर्किटेक्चर है उसको वापस रिवाइवल करके और उसमें नई शान लाने की कोशिश, नए तरह से प्राण फूंकने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं यहाँ पे। और उनका एक पेपर उन्होंने प्रेजेंट किया था इंडिक वास्तु कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उन्होंने स्थल, तीर्थ और बिंब, इन तीनों से क्षेत्र का बनना। स्थल माने द टेम्पल कॉम्प्लेक्स, उसका लैंड हुआ वो। तीर्थ माने जो वाटर बॉडी हमेशा हमारे टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस में जो होती है उसको तीर्थ कहा जाता है। ये कितनी बढ़िया बात है। और बिंब जो है वो उसका फ्लोरा एंड फोना, माने हम अगर आगमज में देखें क्यों एक चीज़ हुई है कि डर के कारण हम जो है
ओवरऑल जो नए जो पीढ़ियां हैं वो डर या फिर जो हमारी संस्कृति को लेके चलने वाले जो सो कॉल्ड हम अगर ब्राह्मण कहें या फिर पुजारी कहें जो भी, तो वो काफ़ी डर का माहौल खड़ा करते हैं। इस वजह से जो नई पीढ़ियां हैं तो वो उससे जाने से डरती है। पर खैर डर से ज़्यादा ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं और इसको इतना इसका यानी स्टडी के बिना जब आप करने की कोशिश करते हो तो वो डर के स्वरूप में आ जाता है, उसमें फ्रीडम नहीं रहता है, क्योंकि कोई बताता है कि आपको ऐसे ही करना है तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। पर आप अगर उसको खुद स्टडी करके और उसमें जाने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि ये बहुत बड़ा गहरा समुद्र है और जो कि जिसकी असीमितता है, ये नॉलेज जो है वो उसकी कोई सीमाएं नहीं है। तो वो ऐसा कहते हैं कि जो है ये फूल लेके और जो है हमें इनको चढ़ाना है। अगर वो देव को हम फूल के बिना वहाँ पे जाके और हमने हमारी प्रार्थना रखी तो वो स्वीकार भी नहीं होगी। वैसा शास्त्र जो है कुछ चीज़ें डिसिप्लिन में लाने के लिए इस तरह से एकदम स्ट्रांगली कोई स्टेटमेंट लिख देते हैं। पर खैर, तो मैंने बात की स्थल, तीर्थ और बिंब, जो फ्लोरा एंड फोना, तो ये सारे जो है वो इतने ज़्यादा संस्कृति में, यानी आप हर रोज जाओगे तो आपको जो है वो क्षेत्र में पहुंचना है, स्थल पे पहुंचना है, नहाना है यानी तीर्थ में जाके और जो है प्योरीफाई होना है, या फिर पाँव जैसे हम गिले करते हैं या धोते हैं या हाथ पाँव धो के फिर अंदर जाते हैं, वो हुआ। और फिर उसके बाद जो है वो जो चढ़ावा है, जो भी वहाँ का जो लोकल फ्लावर्स फोना जो है उसको हम लेके और जैसे ही जाते या फिर हम खरीदते हैं, ये भी एक बात हुआ। तो वो कल्चर जो है, वो इकोनॉमी जो है, वो माइक्रो इकोनॉमी जो है वो काफ़ी सारों को जो है जीवन निर्वाह करने के लिए वो प्रेरणादायक हो जाती है। तो ये लेके और फिर आप जो है ईश्वर के पास पहुंचते हैं और पूरा अपना जो है ये पूरा प्रदान करते हैं। तो उनकी स्टडी बहुत ही अच्छी है। मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारी जो यंगर जनरेशन है उनको ये उनके नॉलेज के द्वारा एटलीस्ट अभिजीत जी और कमलाकर जी और उनकी वाइफ तीनों जो है इस क्षेत्र में बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो उनको आई थिंक एक्सपोजर ही नहीं होता है। अगर एक्सपोजर है तो फिर अपने आप जो है वो आगे लेके जाएंगे, वो पक्का है। तो बच्चों को सिर्फ हम हमारी संस्कृति को और उनको अवगत कराएंगे तो भी काफ़ी सारा काम हमारा हो जाएगा, ये पक्का है जी। माइक लगा लेंगे तो भी चलेगा। या दिस वाज गुड, हो गया, डन। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं। Just a minute. ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतम्। No, please be seated. I think still there is something. Yeah. Just I think it will be resolved now. ठीक है. Yeah. To also tell today through the work that we are doing, that if we say just the past India, so the present will be lost. What are our contribution as a new countrymen born today to offer from our wisdom to the rest of the world? We cannot. So if we talk India, तो वहीं brackets आ जाएगी, वही सब intricate work आ जाएगा, carving आ जाएगा, वो का वो. No, this is not today. This cannot be present. We need to really find that today Bharata, what just understandings of the wisdom is important, but how we really interpret them, how we think of them, what do we, because
सबसे बड़ी भारत का नाम ही जो है उसी में लिखा हुआ है कि जो दैट हु इज अ सीकर, दैट हु इज अ सीकर, जो है खोज करता, वो जो है वो भारतीय है, वो भारतीय है। तो जब हम खोजी ही हैं सभी, जब हम when we are all seekers, how can it be that whatever that has been told in the past only rules? No, it cannot be that way. Today we have to find our own selves, find our that value systems our own way and present it to the world. This is absolutely, that is what is the try. That is what is the try, and not to go into the past and look back and just replicate that which has already been done. No, that is absolutely not the idea of the work that we are doing. Yeah. And the interaction with how Bharata can be reflected into what we do. And we found these lovely diagrams that are there. And these lovely diagrams, everyone knows this. These are mandalas, right? They are the ones which literally mean circle, and are the spiritual symbol in Hinduism representing the universe. Now, this idea of representation of your thoughts, that is such an intangible idea. To bring it on a tangible form was given by our rishis right away, long back, that the meditation processes that you are passing through, and whatever that part you are going through, you can actually represent it on your paper. So this idea of mandala really struck us, and we took up a mandala right from somewhere from the internet and started really made it simple, and then applied onto a plan of an Ayurvedic store that we were designing, and just made this all sections. But never ever had we before done such lines. That is what the realizations came about, that to make these lines, which that too confidently, with some certain scale, idea, some kind of a logic to it, this had never happened before. So we really fell in love with what really came about. And during those times, Padma Shri, Gundecha brothers, who are the practitioners of the oldest form of existing music in the world, and that is the Drupad Gayaki, and they hail from Bhopal. And you won't believe this one, but the Dagar brothers, the Dagar Gharana, from last 40 generations, they were the ones who kept this musical form alive, or else it was to get perished. And then one of the brothers decided to really give it off now back to India and in other Indian seekers. So that way, my clients, they became the Sishya to Zia Moinuddin Dagar and Zia Fariduddin Dagar, both of these Dagar brothers. And there is a long chain of families though, but these two really came out and started dissipating their knowledge, which they had traditionally been carrying with them. So they came and performed in one of the music festivals that we had arranged in Bharuch, and they came and performed over there. So after the performance, they actually came to our house, which you saw a while before, and they offered us to do their farmhouse, looking to our house, because their experiences in Italy and the European world, they really liked the exposed brickwork architecture, and so they decided to go with us for their work. So having done that, so the next question to us was that what should be the application of raga for the profound musicians who appreciate architecture? Can we represent raga graphically? Can we make a rag mandala? And this is what I told Dr. Janki. I questioned her, and she said, let's try. So now I'm going to present this process of what we tried. Let's see and experience this part. So all the music of the world consists of 12 swaras. Till now we are aware of 7 swaras, sa re ga ma pa dha ni. We are aware of this. But there are 5 vakra swaras in between also. Okay. So all the music every music that you hear in the world just consists of 12 swaras. Sa re re ga ga ma
ma pa da da ni ni sa. And further, from their feedback, we chose Rag Charukeshi to be used in this particular project. Now, what is a raga? Very distinctly, I will just put, if it is an airport design, if it is a railway station design, if it is a school building design, if we just take these typologies, then these are ragas. We can consider that to be ragas. Can you get me? Broadly, if I just compare this to understand that if these projects, the way they are varying, so are the ragas varying. This is, we can take it very lightly in this way. So, Rag Charukeshi. Now, if I want to, so the Rag, okay, the Rag structure, I will just tell a bit about that also. That a Rag structure, of the 12 swaras, if you have to minimum use 5 swaras. If it is less than 5 swaras, it is not a raga. If it is more than 7, it is not a raga. There are certain exceptions to this, but mostly it has to be 5-5, 5-6, 5-7, or 6-5, 6-6, 6-7, or 7-5, 7-6, 7-7. Okay. So now what I did is two things. So Aroha and Avroha. That is the ascending and descending path. So this is very mathematical in a way, and there the swaras can be different. Like the ascending can have 7 and the descending can have 5. So these are the 9 combinations which are possible to make any raga that exists in the Hindustani classical system of music. So let's hear the sound. What does this? This is called the Sampurna Sampurna, because it has the 7 and 7 combination. So it is called as Sampurna Sampurna Jati. Sa re ga ma pa da ni sa. Sa ni da pa ma ga re sa. So that's what it sounds like. Further, now if I am to tell you all that a lady with a lovely bunch of hairs, sharp eyes, who is she? In black, who is she? Yeah, Kanika. Yeah, you're right, Kanika, right? So now by describing, or say white hairs, handsome guy, white shirt, who is he? Then Chafekar Saab, of course, it comes to that one only. So now we are able to, by describing certain physical features, we are able to know a person. Similarly, now what you are going to see is Swara Samus. So whereby if a Gayaka, when he begins singing, he sings these Swar Samus, and the one who understands this Swar Samus can actually make what raga he is going to sing today. That is what it is. So, these Swar Samus are the identity of a raga, right? The way I physically describe them both. So, let's hear these 3 Swar Samus, and which forms the raga, and that have been represented graphically this way. Ga ma re sa re ga ma dha pa. Second phrase. Ga ma dha ni dha sa ni dha pa ma ga re sa. And third. Re ga ma pa dha pa ma ga re. So, when we combine all these 3 Swar Samus, something such comes about. And further, when we combine every information that we had got, then what we come around is the Rag Charukeshi Mandala,
we are rotating this 7 times, and that is what is the formation that we actually get. And this particular Rag Charukeshi Mandala, we use this as the grid now to develop all our works. So till this time, it is Dr. Janki who actually does this work of making of the mandala. From here in, we enter and we do. So now we'll see how we applied this into a particular project. So here is the site. It is 50,000 square feet site, and 6-meter margins as we live onto that one. And then Charukeshi Mandala as the architectural grid, we place it. So as you see that the building line which has been left, we draw the mandala till that point. And then Charukeshi Mandala as the landscape grid. So the outer edge we take till that point, so that becomes the landscape grid. And then overlapping both, what we get is something such a complex kind of a grid. We'll take it later. Yeah. So having done this one, then we develop the architectural planning, keeping mandala as a reference to this one, and that is what has come up. So something such really comes up. Now in normal this one, if I have to draw these lines, then it is extremely difficult. I would not be very confident about drawing these. Also further, the sections and elevations are also derived from this particular mandala, keeping as a reference. Also, very interestingly, I'll also want to narrate this one, that as I said, there are 12 swaras. Now the distance between 2 swaras is half. So when it is 12, so it becomes to 6. Are we clear onto this one? Total 12 swaras are there, and distance between 2 swaras is half. Okay. So the total becomes as 6. Now here we have used 7 swaras, and these swaras are this one, and the distance that is there between these swaras is this one, 1 1 half, 1 half, 1 1. So what we do is that we use this particular way to build the house, and so we call this as a Charukeshi bond. Not the Flemish bond, not the English bond. Now we call this as a Charukeshi bond. So actually, if you go and ask any of the laborer there and go and ask him that what is the brickwork system that you have applied, and he will just go on to say 1 1 half, 1 half, 1 1, 1 1 half, 1 half, 1 1, 1 1 half, 1 half, 1 1. So it's an ordering principle. Actually, we have too much fused with the idea of that it can be Flemish bond, it can be brick bond, it can be red trap bond, that we cannot make any bonds. No, the idea is simple. There should be no break joint, and the building should stay. Nothing else matters. There is no one stops you making your own bonds. So that the house found its own bond by having the Charukeshi bond. And then we had this, there are 2 things to this planning. One is the climatic skin, and the other is the inside, which is the building skin. So the climatic skin has these elliptical cutouts, and according to the directions which they are facing, say southwest, then we need a lot of protection from sun. So it would be more of a blank facade rather than more perforations. Similarly, if it would be northeast, then we need a lot of light to be coming in our north. So there would be more perforations. Taking this idea, how do we make this? So what we do is that from the bandish by itself, we make this brick arrangement pattern and come up with something such. So what you see is in the middle is the line which is the entire, those swaras which you see above. Okay. There are 12 swaras, and when you divide 180 degree by 12, you will have 12 distinct shapes. So now when you have 12 distinct shapes, so as per the use of the swara, if you place them, then they will assume whatever that direction or the angle which they have to. Using that, we make such formation of the jali, and then we use both the sides, and so such beautiful evolutions really come about. And these are the natural consequence, like music when you sing, like says ye sham mastani madhosh kiye jaye mujhe dor koi khiche teri aur liye jaye. Now
we sing this one and we like the melody, right? We like the melody. So already the aesthetic aspect of that part has already been taken care of. So it's just the representation in this form which you put together, it is going to be looking aesthetically beautiful only. So it should be a natural consequence and not out of my wish of doing something that the aesthetics should emerge. It should be aesthetics should be the natural consequence and not an enforced one. That is what I wanted to say from there on. And then one of the brother is a rhythmist, and so his room has been done from the tabla bowl or the pakhavaj bowl that has been used there, and that's the formation of the ceiling shape that has been taken forward, and we have used this. In summary, Rag Charukeshi gets manifested architecturally as Jini, 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 bini chadariya, bini chadariya, kahe ke tana, kahe ke barni, kahe ke tana, kahe ke barni, kona tar se bini chadariya, jini, jini. पिंगला पिंगला ताना भरली पिंगला पिंगला ताना भरली सुषमन तार से बीनी चदरिया जीनी 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 बीनी जीनी बेनी चदरिया जीनी 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 बेनी जीनी 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 जीनी. So that was my client singing themselves, the Drupad in Rag Charukeshi that Bandish was performed. And these are certain live photos. For 4 years it was shunned. Now the work has started again. I'm so happy that the project is on. And it's really heartening. The brickwork, the way it is coming about is something which we really like, the way things are coming up on site. And you can see the Rag Charukeshi bond as well coming into play. And we had never attempted anything such in our life before, the three-dimensional building, the way it is being built. And yes, this is what is coming about. And of course, since they are influential musicians themselves, Zakir Hussain Sahab also visited. And we were very fortunate that on 15th of January, Christopher sir also blessed the place, one of my gurus again. And from there, he clicked these photos. These photos have been taken by him, and he called us actually. It was a Sunday morning, and he called me and Maitri and really had a dialogue with us, blessed us, and really made our day. That day we couldn't work, Saab. It was absolutely clear that to receive blessing from such an eminent person, I think they're saying go on. That is what it is, I really say. So we had these blessings from him. And very briefly now, because time is a constraint, journey 2016 till now, at least few projects that we have done, we'll just cover it in a fast shot. Please, let's enjoy this journey.
One interesting thing, keep claps yourself only. People will clap for you. Part apart. So, in finality, we have to decipher, understand, use, and be proud of what we possess. After all, we are one of the oldest civilizations in existence with a highly developed and testified heritage. I thank Joseph ji for really making this opportunity for us to be over here and really making us a part of this lovely moment and share our experiences with you all. Not the least, and this bold and beautiful lady, love you for this opportunity once again, Kanika, making us a part of your family and really bringing us along. Thank you so much, Kanika. And thank you to you all. Check. Yes. Yes, we. Just for the update is that we've captured it on another camera already, so we don't need to recuperate that. You know, well, there's a beautiful saying, never judge a book by its cover. Sometimes when you look at the stature for personality, we don't really know the in-depth profundity, the fathoms that you can go deep in terms of how they can exude this finesse. And, you know, yes. Yeah, but the cover here is as exciting as the... Very, very, very true. In fact, you know, when we met with him for the first time, and everybody else would say, yes, we've got gurus of architecture here with us today. You know, sometimes it's unbelievable that you might have done many things, laurels and accolades, 10, 20 years of exposure and being there. But, oh my goodness, this is just out of this world and outstanding. Thank you very much. Thank you very much. One more big, big thunderous round of applause. Yep. Yes. So, while... Achha, you Questions, please. No. Let him say he cannot go so soon. So... Yes. Yeah. So, Kalapi, mind-boggling and absolutely, so it is... there are no words to express the way you have fused... Absolutely. So, the depth of knowledge that you have and the way you have merged, like bringing so diverse streams of music and architecture and dwelling it into realism and making it a reality.
I don't think we have learnt it or we have ever seen. In Altar, 2 decades of being, I have never seen such kind of depth of knowledge and bringing to reality architecture, looking with these lenses that you have. So lovely, great. Couple of things I wanted to ask you. When you showed the first site of 50,000 square feet and you impersonated the mandala onto it, in which direction do you orient the mandala? Because I didn't see the north there, so. Hello. Yeah. If you just realize one part that the whole mandala came into formation by a geometric pattern repeated. Correct. So 7 times it was repeated, and then when we overlap both of these mandalas, the landscape and the building mandala, then it becomes 14 of them. So it was placed half differentiated. So 14 of them. Now what I do is we align that with the north. You see, the most important part I always like to mention that 20 years of truthful architectural practice whereby the winds, the directions all have blessed you. Now those are like you ask Sachin why did he play that kind of a shot some fine day, or Dhoni coming and playing that helicopter shot that day. But he has rehearsed that part so very well and the other shots so very well that for him to take up such a kind of a shot is easy. So you can't leave your basics. Architectural basics have to be there, and yet then thereafter, now where do we take our directions forward to? Like people found their inspirations like Frank Gehry, Zaha Hadid in paintings, then Peter Cook, Peter Eisenman from the writings of Jacques Derrida. So if you just observe, then the boundaries, existing boundaries of any of the architectural works that are being done are actually a fusion with some or the other art form, and there then by whatever work that happens, taking it further, comes up with what. But when you worked with Doshi, music as an art form wasn't there. It was because of you having music so strong in your family. So True. when was the spark, or when was the point when you thought that you would want to marry music and architecture? So as I described that moment where our father came and told that well, you have to make a Gurukul for But Janki. that was 2016. Yeah, so that is where I say that. That late. It's just yesterday. just 2015 this entire journey started, and there that So nationalist spirit also. So till 2015 you were practicing as a regular with a normal shirt and pant. Yeah, shirt and pant, and thereby also we had reached a stage. That is where I really we had already carved out a niche for ourselves nationally, which was very important. Coming from a small town, these things you won't realize, but that recognition to really bring or carve your niche into that that level is difficult. So we had already done that. Yeah. That adds further feathers to your cap, because 7 years of what you have achieved. So it is not a 20-year story, but just a 7-year story. So the depth that you have achieved in 7 years of practice it looks like it is at least 2 decades of 3 decades of depth of research, and having that in 7 years is nothing. Thank you. Thank you, Architect Nilesh. Yes, Architect Prashant. Okay. Kanika. Yes. So a big thank you to you, Kalapi, for transporting all of us to this divine planet of music and architecture. So that's a big thanks. So brilliantly you've decoded, especially the representation of Swara breakdown was absolutely fascinating. Small nuances, like, the word bandish just at the right juncture made all the difference. Your jargon of Indian philosophy punctuating the entire presentation was awesome. Even you're reinventing the brick masonry bonds. So I want to ask you one question. Symphony of bricks, architecture with the ragas. So
we saw one raga being converted and decoded. So is it possible to do this with the other ragas? If so, I mean, which one have you experimented? That's the first. Okay, so as you rightly saw, Rag Hindol and Rag Kirmani, they were already present in that slide which went like the whole presentation. In total, Janki has made 30 Raga Mandalas by now. And if I say, then we ourselves must have worked in more than 7 ragas till now. And that makes it more interesting day by day as you go forward, because this was the first project that we started with the Rag Mandala. But now taking that forward and having worked on the same raga principles on various projects, it brings in a very, very, very beautiful understanding, and also a kind of opening up of the entire new world to venture in. That's certainly happening. And so someday, if you will not give the topic, then we will be able to show you all the projects that we have done on raga, just on ragas. Yes, I'm sure there's going to be a next time very soon. Sure. So, second, the brick exploration in terms of again your raga and the bonds. Can we do the same today in our projects? How relevant it is in terms of costing and practical application and also skilled labor? You have to do a lot of mentoring to them. Actually speaking, they are the most adept. They already adapted. If it fits in once, the formula fits in, as I said, 1, 1, half, 1, half, 1, 1. Right. So now if you will go there, then they will teach you actually that this is 1, 1, half, 1, half, 1, 1. So it is just, and in fact, the most truthful practices are by them. They will not, in fact, never break that rhythm. We might, हमारा कुछ नहीं हो रहा तो चलना खत्म करना लगा दे इधर हो जाएगा, but they will never do. Then they will take rip of whole entire course and see to it that it is 1, 1, half, 1, half, 1, 1. So this is something which I think the genes of our nation carries this, that precision, perfection, or to see that God right into making of everything. So that's there. That's there. Okay, then the third thing you mentioned, there was one of the slides which said that the ancient people used mantras to evoke deities, and when you were showcasing also the temple tanks and things like that. So how do we apply it in our practice today? I mean, you know, using that. So it's absolutely an established practice of yantra, mantra and tantra, which this nation has given to the entire world. So the yantra, actually if you see these geometrical form, and so we also have the Shri Yantra. We have this, so many, we have the yantras for everything, na? All the planetary yantras, we have the god goddesses yantras, everyone. You want to worship them, if you sit or worship that particular geometry, then you're connected. So all the numbers also. Now, if we just see the, which is very much famous now, the Loshu grid, if you have heard of this or not, I don't know, but Chinese art form of prediction is a Loshu grid, which is a Surya Yantra. The numbers are the Surya Yantra, which they use and they do the predictions there. So these are very much, so the yantra part of it, then the yantra mantra. So invoking that yantra and to make it alive, because till the time you don't make it alive, it is dead and it is of no use. But when the prana goes into it, now it is enlivened. And then the tantra part of it, that is this oratory, rather the chanting, the mantra part of it, the chanting of it, it actually then evokes that spirit, and then whatever required is done. So this is a very beautiful practice. Only thing is that we need to really go back and somebody has to make us explain again. So we are not aware. I mean, we are basically that is where unaware. So we have to really, you know. The education system has made it clearly that this should not be the part of you. If you will know your own roots, then how will we prevail? So that is what it is. And I think there is a big revival that is coming in. And since I would say this is the country who understands the cosmos the way it works.
and it has decoded everything. So it is just going back and really connecting back to this entire system of, or the mechanism of the cosmos, the way it works. Also, it was very fascinating to note the 48, how many were they? 48 water Indian... 42, yes. 42. It was, I mean, amazing, awesome. I don't think words can describe that. You know, when you showed the slides, wow, we have such, you know, amazing structures and water ponds and water bodies in it, but I don't think we've ever revered them. You know, we've never celebrated it. So the minute I saw your slides, I said, wow, my God. You know, India, country, I mean, we're so rich with all this. Absolutely. So I think we really need to awaken in that sense. So I think all in all, a brilliant presentation, so fascinating, so much of mystery. I think it's still mysterious and beautiful nuances, especially of the Indianness and Bharata and the Raga. Wow, thank you. Thank you. Thank you.